Okay, moving on now. The Aam Aadmi Party leaders in a series of tweets have lashed out at the centre for allowing the Pakistan probe team to enter India to investigate the Pathankot attacks. Presently, the Chief Minister is speaking. Let's just listen in to Arvind Kejriwal. तो एक तरह से हमने आईएसआई को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया कि आईएसआई अब हम ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी के मामले में बहुत बड़ा चेंज है। अब हम पूरी दुनिया के सामने जाके कैसे कहेंगे कि आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है। अगर आप अमेरिका के साथ पास जाके कहोगे, पूरी दुनिया के साथ पास जाके कहोगे आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है, तो अमेरिका कहेगा भाई आप ही ने तो जांच के लिए बुलाया था। आईएसआई कहाँ आतंकवाद फैला रहा है? दे दिया कि आईएसआई इन्वॉल्व नहीं है। अब हम ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी के मामले में बहुत बड़ा चेंज है। अब हम पूरी दुनिया के सामने जाके कैसे कहेंगे कि आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है। अगर आप अमेरिका के साथ पास जाके कहोगे, पूरी दुनिया के साथ पास जाके कहोगे आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है, तो अमेरिका कहेगा भाई आप ही ने तो जांच के लिए बुलाया था। आईएसआई कहाँ आतंकवाद फैला रहा है? वो आप ही ने जांच के लिए फैलाया था। तो एक तरह से आपने आईएसआई को क्लीन चिट दे दी है, जो कि मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह से आईएसआई को क्लीन चिट दी है कि आईएसआई किसी भी हमले का दोषी नहीं है। जबकि सारा देश और अजीत डोवल जी ने दिसंबर के महीने में अपने काउंटर पार्ट जो पाकिस्तान के एनएसए हैं उनको पूरे डोजियर्स भेजे थे कि किस तरह से आईएसआई इन्वॉल्व है इन 26/11 में और सारे संसद के हमलों में जितने हमले अभी तक हुए हैं कैसे, और अब अचानक ये पूरी पॉलिसी बदल गई। तो आज जो आईएसआई ने किया, ये हमें पहले ही, हम लोग जिस दिन आईएसआई के अफसर आए थे जांच करने के लिए, हम लोगों ने दिल्ली असेंबली के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था, बाहर भी पूरा रोष प्रकट हुआ था, जनता ने रोष प्रकट किया था। सारे लोग कह रहे थे कि देखना आईएसआई जांच के बाद यही कहने वाली है कि कोई सबूत नहीं मिला, आईएसआई को कोई सबूत नहीं मिला। आईएसआई ने तो उससे भी ज्यादा बढ़ के कह दिया कि भारत ने हमला अपने ऊपर खुद ही कराया था। तो हमें लगता है कि भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा आज तक कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गए थे। 2 जनवरी को पठानकोट का हमला हो जाता है। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री जी की क्या डील हुई थी, अब ये सारा देश जानना चाह रहा है। दोनों के बीच में क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, सारा देश जानना चाह रहा है। 1 हफ्ते के बाद ही पठानकोट पे हमला हो गया। क्या प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ को फोन करके बोला कि ये क्या करवा रहे हो तुम? अभी तो मैं आया था हैप्पी बर्थडे बोलने, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने, 1 हफ्ते में आपने क्यों अटैक करा दिया? क्या उन्होंने चिट्ठी लिखी, स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखी उनको, नवाज शरीफ को? कुछ नहीं किया। जिन्होंने हमला कराया उनको ही बुला लिया कि तुम ही जांच कर लो। तो कुछ ना कुछ तो डील हुई है नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री जी के बीच में। सारा देश आज प्रधानमंत्री से जानना चाह रहा है कि दोनों के बीच में क्या डील हुई है। और बीजेपी और आरएसएस के लोग, उनकी अब एक ही फिलॉसफी हो गई है। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह से बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, और आईएसआई को बुला के भारत माता की पीठ में खंजर घोंपते हैं ये लोग। मैं फिर भी, अगर कोई बीजेपी और आरएसएस के अंदर देशभक्त बचा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। उनको भी अपने अंदर आवाज उठानी चाहिए और मोदी जी से प्रश्न पूछने चाहिए कि वो क्यों घुटने टेके हुए हैं। पाकिस्तान के साथ क्या डील हुई है प्रधानमंत्री जी की? चुनाव के पहले सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, आप देखेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 सर कटेगा 10 सर काट के लाएंगे। कहते थे लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को उसी भाषा में समझा। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? 25 दिसंबर को जब वो हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गए थे, उसके अंदर उनकी क्या डील हुई है? तो ये देश इसको कभी माफ नहीं करने वाला और पूरा देश इसके खिलाफ है। जिस तरह से आज देश को पाकिस्तान के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, ये देश इसको बिल्कुल कबूल नहीं करने वाला और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। जिस तरीके से आपके अपने मंत्री वाकई में ट्वीट भी कर रहे हैं, जिससे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद अब आईएसआई के एजेंट हो गए, तो उसका क्या कहना है? सारे देश की खून खौल रहा है। ये केवल वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का, पूरे देश के अंदर खून खौल रहा है लोगों का कि ये हो क्या रहा है, वो क्या मजबूरियां हैं। अभी तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में भारत बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। दोनों के बीच में हम मजबूत होते थे। भारत बहुत बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, इतनी संपदा है हमारे पास। आज वो क्या मजबूरी हो गई कि हम घुटने टेक के खड़े हो गए?
तो लोगों के अंदर की भावनाएं जाग रही हैं। विदेश नीति बिल्कुल फेलियर है, लेकिन उसका कारण समझ में नहीं आ रहा। कई बार कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से कुछ निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या मजबूरी है? दोनों के बीच में, नवाज शरीफ और पाकिस्तान और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में क्या डील हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पठानकोट पे हमला हुआ, हमें उसका सख्ती से विरोध करना चाहिए था। विरोध करने की बजाय जिन लोगों ने हमला किया उन्हीं लोगों को अपने जांच करने के लिए बुला लिया। डील हुई है तो वो लोग तो नहीं बता रहे कि क्या डील हुई है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या इनपुट है? पता नहीं, आपको ज्यादा पता होगा, वही बताएंगे। तो भाई अब जो भी डील हुई है, देश जानना चाहता है ना क्या डील हुई है। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, 120 करोड़ लोगों का सवाल है। 120 करोड़ लोगों के बिहाफ में अगर वो कोई डील करके आए हैं, वो बताएं क्या डील करके आए हैं। आप भी चला रहे हो, मैं तो आप ही के ऊपर भरोसा करता हूं, मैं पाकिस्तान पे नहीं। मैं तो आपके टीवी चैनल देख रहा था, आप कहते हो सच हम दिखाते हैं, तो हमने सोचा सच ही दिखाते हैं। सबकी भावनाएं भड़क रही है। देखिए, अब आप उसमें जाएंगे, भाषा खराब थी। अरे देश बिक रहा है, आप उस छोटी सी चीज को छोड़िए। देश बिक रहा है, देश खत्म हो रहा है। मोदी जी माफी मांगे देश से और बताएं, मोदी जी देश से माफी मांगे और बताएं कि उनके और नवाज शरीफ के बीच में क्या डील हुई है। थैंक यू। Okay, so that was the Chief Minister Arvind Kejriwal attacking the Prime Minister over the Pathankot joint investigating team that had come in from Pakistan. Now, he was responding to, the tweet that had been posted by the Delhi Minister Kapil Mishra, who did spark a huge controversy by comparing the Prime Minister with an ISI agent. We heard the Chief Minister mincing no words in criticizing the Pakistan joint investigating team that had come to the Pathankot air base to, carry out their own investigations. He has termed the visit of the Pakistan joint investigation team as absolutely disgusting. That is what Arvind Kejriwal had to say. He also has said on an earlier occasion that the country does not really need a certificate from their neighbors to, to question its authenticity, the probe's authenticity. Kumar Kunal joins us for more on this. Kumar, we just heard the Chief Minister demanding an apology from the Prime Minister and also comparing him to an ISI agent. Okay, we'll go to Kumar Kunal in just a short bit, but we just heard the Delhi Chief Minister attacking the Prime Minister over the Pakistan joint investigation team that had come into India to probe the Pathankot terror attack. He has called it a very unfortunate development that had happened, and he has even demanded an apology and an explanation from the Prime Minister as to the reason behind a Pakistan joint investigation team actually had to come and carry out their own investigations into the Pathankot terror attack. Joining us now is Kumar Kunal. Kumar, if you can hear me clearly, that was, very, very strong words coming in there from the Chief Minister, attacking the Prime Minister, demanding an apology from him and even comparing him to an ISI agent. Yeah, and this is a very serious kind of attack which has been made by no other than the national convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and this is most vicious attack on the issue so far, you can say. Basically, after the JIT report has been leaked in Pakistani media, and what has been reported that JIT is not buying Delhi, the center's whatever the center is saying. So Arvind Kejriwal has made it very clear that Prime Minister Modi is whatever Prime Minister Modi is trying to do is not in the interest of the country, and he is the weakest Prime Minister whatsoever in the history of India. So this is the most vicious kind of attack by Arvind Kejriwal, and one thing has to be put into the consideration that Punjab election is due next year. So
So he is making a political statement. Okay, stay with me, Kumar. Just stay with me, if I may just interrupt you there. We have from the BJP, Shazia Ilmi. Shazia, we just heard the Chief Minister, making a very, very stinging attack against the Prime Minister, comparing him to an ISI agent, demanding an apology and an explanation about, the need for a Pakistan joint investigation team to come to Pathankot. What do you have to say to that kind of, statement made by him? I don't think we should dignify the remarks of somebody so desperate and intoxicated by power that he brings down the name of his own Prime Minister, in not just just to win an election in Punjab, but also to bring down the whole level of discourse. If you remember, Avantika, it was him who called Prime Minister Modi a psychopath. This is the kind of language this man uses. I mean, come on, people can have political leanings, affiliations, desire for power, but will they stoop to this low to call names of your own Prime Minister? After all, it is the Prime Minister's office. And to call him an ISI agent? Right. I mean, it's a really a new low in Indian politics. I think not just Arvind Kejriwal should apologize, but all the people who support him. Even his ministers should be asked this question. Then are they okay with this? Are we okay with this kind of language in public discourse? Do you know what it makes us look like? I mean, how low can you go? Right. To make a point? It's a question. Language aside, he also has been very critical. Not only him, in fact, the entire party has been very critical about the Pakistan, joint investigation team coming to India and carrying out their own investigations. And now we're also getting in reports that the JAT team, from Pakistan are, indulging in this double speak, blaming India for carrying out that attack. What do you have to say about that? No, that is a different matter altogether, and India has to do what India has to do. I think this was it was a masterstroke to let the whole world know, and we have spoken about this subject many times, and to give evidence and say this is what happened. This is the open dialogue for the next step, and Pakistan acknowledged that terror emanated from the soil. But what does domestic dirty politics have to do with this? I don't know. I don't get it. I mean, we are two sovereign nations with nuclear capabilities. We don't want a war, do we? We want to keep diplomacy alive. We want to keep the safety of our individuals alive, which is why in the international eye for a... But ma'am, do you think they can be... Let me finish. Actionable intelligence for the whole world to see, and we'll keep doing it. We'll keep calling a spade a spade. We'll keep, not just the Prime Minister, but we must trust the Prime Minister and our NIA and our foreign policy experts and our bureaucrats and our army and our intelligence. We will keep showing the proof again and again of what Pakistan did. But does that mean that one person, a small timer like Arvind Kejriwal, will get so nasty and in order to just gain political gains that he will do this? And when I say a small timer, it means that he's not looking at the larger interest. He is only so desperate about his own image that he wants to bring down the integrity of a nation, of a Prime Minister and the office of a Prime Minister of his own country. That's why I call him a small timer, not for any other reason. Because it's a small way of looking at things. It is just him and himself and the gains of Aap and Punjab. But and I think it will work. It will not go very well with people. It's not just the Aam Aadmi Party. Other opposition parties have also been very critical about the JIT. But speaking about that open dialogue that you just mentioned between the two countries, while no one is really doubting the intent of inviting the Pakistan joint investigation team into India, but can there be an open dialogue? Because we're getting in also a lot of reports from Pakistan media that this team also claims that India used this attack as a tool to expand their own vicious propaganda against Pakistan. See, those reports have been coming in, and there's been this surreptitious thing goes on at another level at all times. But has anybody, and other parties have also been critical, but has somebody stooped to this low? Right. Nobody has. See, this is what Arvind Kejriwal wants the media to do. When his own bureaucrat was facing a corruption charge, when his office was raided, he made it about Arun Jaitley. So that the media stops asking questions on what he said, and that he had a stained bureaucrat. This is exactly what he's doing now. You've asked all these questions when JIT team was underway. All these have been done 1 week back. Yes, because that press conference was about that. Yeah, but now it is about Arvind Kejriwal's language and his desperation for power
to use even a tragedy like Pathankot and to subvert one's own nation's dignity to get power, and that is very sad. I mean, I really feel sorry for him, and I think people should see through what a desperate and a cunning man he is. Okay. Ms. Shazia Almi, thank you so much for joining us and, of course, sharing your views. That was Arvind Kejriwal, who just addressed a press conference a short while back where he attacked the Prime Minister over the Pathankot joint investigation team that had come in from Pakistan, and he is now demanding an explanation and an apology from the Prime Minister, where his party has also compared the Prime Minister to an ISI agent. Well, in breaking news coming in, the centre is to withdraw its appeal from the Supreme Court against the 2006 Allahabad High Court verdict, holding the Aligarh Muslim University as a non-minority institution. Footwork correct? Hi, this is Kohli very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very